Okay, now here we have one very interesting function. Function f from set R to R, where fx is greatest integer of x plus square root of fractional part of x. We have to find function f inverse x. Okay, now let's first verify that function fx is 1 1 and onto. Now clearly domain of function will be set R. यहाँ पे हम x को कुछ भी ले सकते हैं. x की किसी भी वैल्यू के लिए हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा और उसका फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा. फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो उसका स्क्वायर रूट भी डिफाइन होगा. सो डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी आर, जो यहाँ पे गिवन है, एग्जॉस्टिव डोमेन गिवन है. ओके, लेट्स चेक फंक्शन इज 1 1. क्या करेंगे? वी हैव fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ओके, नाउ वी कंसीडर सम इंटरवल्स एंड राइट सम ब्रांचेस ऑफ फंक्शन fx. फंक्शन fx की हम कुछ ब्रांचेस लिखते हैं इंटरवल वाइज. वी हैव fx इज इक्वल टू, if we consider x belongs to closed interval 0 to 1, then we will have fx is equal to 0 plus root x. ये आएगा. Okay, let's draw the graph of the function also. We have here coordinate axis. In this interval we have fx is equal to root x, so we have this graph. हम जानते हैं root x function का ग्राफ कैसे होता है, वो इस तरह से होता है. It's a part of parabola. Okay, then we consider x belongs to closed interval 1 to 2. Okay, here value of greatest integer of x will be 1, so we will have fx is equal to 1 plus root x minus 1. ये होगा. ठीक है, at x is equal to 1, value of this function will be 1, and at x is equal to 2, if we consider x is equal to 2, value will be 2. Okay, so we have this graph. Values of y will be from 1 to 2. ठीक है ना. Now we consider x belongs to closed interval 2 to 3. Okay, for this values of x, value of greatest integer will be 2. So we will have here 2 plus square root of x minus 2. At x is equal to 2, value will be 2, and at x is equal to 3, value will be 3. So we will have this graph. ठीक है, ये पार्ट आएगा. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सम पैराबोला. वो पैराबोला कौन सा होगा? पैराबोला विल बी, we consider y is equal to 2 plus root x minus 2. So we will have y minus 2 whole square is equal to x minus 2. So this is part of this parabola. Okay, similarly we will have parts of other parabolas like this. Okay, for negative values of x also, and from the graph clearly function is 1 1. फंक्शन इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है. फंक्शन का कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे 1 1 है. व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? वी हैव वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सो रेंज ऑफ फंक्शन इज आर. दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू. ठीक है, सो हियर फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टिबल. We verified that function is 1 1 and onto. Now let's find f inverse x. Suppose x belongs to closed interval n to n plus 1, where n is an integer. Okay, so we will have greatest integer of x is equal to n. Okay, so from this we will have y is equal to n plus square root of x minus n. ठीक है, now we have to get x in the form of y. We will have x minus n, square root of x minus n is equal to y minus n. Now we square both sides and take n on RHS. We get x is equal to n plus square of y minus n. ठीक है यहाँ तक. Now can I replace this n by greatest integer of y? From this relation, we can say that greatest integer of y is equal to n. What is the reason? We have y is equal to n plus root x minus n.
x minus n lies in close interval 0 to open interval 1. Okay, so greatest integer of y will be n. ठीक है, we have n plus some fractional value, proper fraction. ठीक है, तो y का जो greatest integer है वो n होगा. ठीक है, so we have x is equal to greatest integer of y plus square of y minus greatest integer of y. Okay, so we have here greatest integer of y plus fractional part of y square of fractional part of y. Okay, now we interchange names. हम x and y के नाम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें इन्वर्स फंक्शन मिलेगा f इनवर्स x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन. पहले तो हमने वेरीफाई किया कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू है, जो होता ही है, तभी हमें एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए कहा गया. बट वेरीफाई करने में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन वी गॉट फंक्शन एफ इनवर्स एक्स. इसको निकालना भी एक चैलेंज था. ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज ऑल्सो एन. ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो. Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Maths books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon and Flipkart.